So first we are going to discuss the topic maxima and minima. Maxima, I'm not going deep into the theories, I'm just directly coming to the problems. Maxima and minima. Maxima matlab the maximum value and minima matlab the minimum value. So for any function, it is not necessary that every function will have a maximum and minimum always. See, I will show you different examples. Suppose so maximum value देखो from the name itself maximum मतलब क्या है सबसे maximum value, that means उससे maximum कोई भी value नहीं है, and minimum value मतलब सबसे minimum value of the function, उसके minimum कोई भी value नहीं है ऐसे. See for this example, one example I will show you. देखो suppose it's a graph, okay, so it's a graph of a linear equation, correct? I hope all of you are listening. It's a graph of a linear equation, because graph of a linear equation is always a straight line, correct? Now, do this graph has a minimum value? Do this graph has a minimum value? इसके लिए कोई minimum value है क्या? इस function के लिए कोई minimum value है क्या? Is there any minimum value for this function? Anybody? Can't say, sir. बोलो संकेत. नहीं है sir. Minimum value है क्या? See, minimum value जैसे value मतलब जैसे suppose y is equal to एक equation graph, so 2x plus 1. So x is the input, y is the output. Cannot say, sir. Why? Sir, infinity कैसे बोलेंगे sir? नहीं होगा ना. So that means no minimum value है ना. उसका मतलब minimum value नहीं है, क्योंकि when you are moving from left side you can see the graph is going down. So you cannot say y is equal to 6 is the minimum value. नहीं, 6 से भी minimum है. So for this function we cannot say there is no minimum value because it is going to infinity like that. There is no minimum value. Y value, that output values is known as the function value. X is the input. So here you can see that the graph is moving towards, when we are moving towards left, you can see it is going down. So it is not, and it is a straight line, it is going infinity like that. So there is no minimum value for this. No minimum value. No, इस function के लिए कोई minimum value नहीं है. What about maximum? कोई maximum value है कि जैसे y is equal to 10 is the maximum value, means 10 से ज़्यादा इसका value कभी नहीं मिलेगा. ऐसे कोई है कि कोई value है क्या? नहीं है sir. It is going up. You can see that it is moving towards upside. You can see that the graph will never end. It is going on. So there is no maximum value. Okay. Then another question. This concept clear करने के लिए बता रहे हैं. It's a quadratic equation. Graph of a quadratic function. It's a quadratic function. Okay, parabola shape is U-shaped, whatever it is. And what about this function? Does this has a maximum value or कोई maximum value है क्या? Is there any maximum value? No maximum.
क्योंकि you can see that in both directions it is moving up. So there is no maximum, but minimum है क्या? Yes, sir. Yes, minimum value is there. Yes, minimum value is there. So the minimum value exists at this particular point here. See this vertex. Here is the minimum value. Whatever value, say अभी if it is 1, so उससे नीचे कभी ग्राफ का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा. So for this particular example, you can see that there is a minimum value, but there is no maximum value. I will show you another case. This also U-shaped graph. It is quadratic. This is also graph of quadratic. That's also graph of a quadratic equation. This is also graph of a quadratic equation. Both are U-shaped graph. And what about this function? Is it having a minimum value? It is opens down. You can see that there is no minimum value because it is opens down, it is going downwards. But maximum value exists. क्योंकि this particular point here is the maximum value. इससे ज़्यादा फंक्शन का वैल्यू नहीं जाएगा क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों साइड देन उससे नीचे ही है. कभी उससे ऊपर फंक्शन का वैल्यू नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है इट्स अ यू शेप्ड ग्राफ. So here it is, you can see that opens down. So at the vertex, this is at the vertex. जो vertex में जो भी value आएगा, that is the maximum value. So in this particular example, this function has a maximum value and a minimum. So there is no minimum value, but maximum value is there. Clear? आ रहे समझ में? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Another example. Say for example, graph of sin x or whatever it is. Maybe exactly not correct, but graph of sin x. See this function. Is this function having a maximum value? Yes. Yeah, this is having a maximum value and minimum value exist. So you can say maximum value is at this point, say whatever it is, maximum value is, we know that sin x का maximum value है 1 and minimum value रहते हैं -1 क्योंकि sin x the graph is always lies between -1 and 1. So for this particular function, the graph is having maximum value is there, minimum value is there. So in general, we can say like this. Sometimes for any function, not it is, I just show you 4 examples only. So for any function, sometimes minimum value exists, but no maximum value. Sometimes maximum value exists, but no minimum value. Sometimes both maximum and minimum value exist, and sometimes there is no minimum or there is no maximum. Okay? So that is a basic concept. We'll come to local maxima, local minima later. This is the absolute maxima or absolute minima बोलते हैं. सबसे maximum value और सबसे minimum value. Okay.
Is it clear the idea? Sometimes a function may have a maximum and minimum. Sometimes minimum होगा, maximum नहीं होगा. Sometimes maximum होगा, minimum नहीं होगा. Sometimes दोनों नहीं होगा, maximum भी नहीं होगा, minimum भी नहीं होगा. Like one more example I can show, like it's a graph of a polynomial function. कोई भी एक polynomial, we don't know, maybe 1, 2, 3, 4, fourth degree, whatever it is. It's a graph of a polynomial function. Polynomial का function का graph हमेशा आपको पता है smooth curve है. So what about the maximum value or minimum value here? You can see that the function is going upwards here. That means it is moving upwards to infinity tak. So you can't find any maximum value. Here also you can say it is going downwards. So in this particular case, there is no maximum, no minimum. Understood? So first we will discuss some problems of this type. Question is, find the maximum and minimum values, if any, as a hetu of the following function. So f of x is equal to 2x minus 1 the whole square plus 3. See, it is not always possible to go and draw the graph and find it out. So you have to think algebraically. For this function, the question is, if this function has a maximum and minimum, you have to find it. So what do you think, whether this function will have a maximum value or minimum value? What do you think? डिफरेंशिएट करके देखने से इक्वल टू 0 पुट करना. नहीं, वो तो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम का केस है, तो आगे आएगा. बट जनरल, इन जनरल वेदर दिस फंक्शन, मैंने तो उसका बारे में कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो एप्लीकेशन में अभी तक गया नहीं. सिर्फ generally I am asking whether this function is having a maximum value or minimum value. Look at the degree of the function. It's a quadratic function. सर मिनिमम है. minimum है सर. Yeah, it's a quadratic function with the leading coefficient positive because 4x square आएगा. So it's a quadratic function. So this should we know this. It's a quadratic function with leading coefficient positive. So it is, graph is opens up. That means we have to find it out. That means f of x will have a minimum value but no maximum values. क्योंकि parabola opens up है तो like ऐसे होगा. So ऐसे हो तो minimum value इधर आएगा, minimum value at vertex. अभी parabola opens down है तो भी ऐसे, parabola opens down है तो maximum
वैल्यू एट वर्टेक्स, ओके, एक पॉइंट। देन आपको वर्टेक्स कैसे मिलेगा? जैसे सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, say y is equal to ax square plus bx plus c. One method, first you write in the standard form, that is one technique. नहीं है तो there is a shortcut, x coordinate of the vertex, x coordinate of the x coordinate of the vertex is equal to minus b divided by 2a. So you will get the x coordinate of the vertex. So once you get the x coordinate, while putting that value, you will get the y coordinate. So you will get the value of the function. Okay. नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे आपने लास्ट ईयर जो पढ़ाई किया था, फॉर्मूला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, right? So x minus h the whole square is equal to 4a into y minus k. ये है तो हम बोल सकते था vertex is equal to h comma k. नॉर्मल केस में vertex at 0, 0, x square is equal to 4ay. सो हमने डिस्कस किया पैराबोला ओपन सब पे वर्टेक्स 0, 0 है. सो लास्ट ईयर हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ाई किया था. सो x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, तो हम बोल सकते हैं parabola with vertex at h comma k. So this is one technique, and here मैंने एक नया टेक्निक बताया. You can directly find the vertex using the formula x coordinate of the vertex is minus b by 2a. Now अभी किसी को ये सब पता नहीं है तो भी, so we know that 2x minus 1 the whole square is greater than or equal to 0. Whatever the value of x, whether it is positive, negative, whatever the value, 2x minus 1 जो भी आपको मिलेगा, कोई भी नंबर मिलेगा, बट जब उसको स्क्वायर करेगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट मीन्स 2x minus 1 the whole square plus 3 is always greater than or equal to 3. So you can say minimum value is equal to 3. Common sense. Understood? इधर हमने कोई मैंने कुछ दूसरा कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सो ग्राफ, पैराबोला है, ऐसे कुछ भी यूज नहीं किया. सो नॉर्मल एक आइडिया यूज किया, whatever the value of 2x minus 1, 2x minus 1 the whole square is greater than or equal to 0. Square of a number is always positive. So that square of that number plus 3 is always greater than or equal to 3. So उसका मतलब कम से कम उसका वैल्यू 3 होगा. Understood? And okay, and when the minimum value is 3, the which is at is at क्या होना चाहिए? 2x minus 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. 2x minus 1 0 होंगे तो 0 स्क्वायर इज 0, 0 plus 3, मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगा, 3 मिलेगा. दैट मीन्स 2x is equal to 1. That means x is equal to 1 by 2. And there is no maximum value. No maximum value because x के लिए अलग अलग वजह से 10 देंगे तो 20 minus 1, 19 square plus 3. x को 100 देंगे तो 200 minus 1, 199 square plus 3. सो नंबर बढ़ते बढ़ते जाएगा, कभी वो उसका एक मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगा. देखो जो मैंने क्वाड्रेटिक वाला बोला है, तो इधर हमने कुछ भी डायरेक्ट विदाउट यूजिंग ऑल दोस थिंग्स, डायरेक्ट हमारा लॉजिक यूज किया.
2x minus 1 the whole square is always greater than 0. So 2x minus 1 the whole square plus 3 is always greater than or equal to 3. That means minimum value is 3. And that 3 कब मिलेगा? 2x minus 1 0 होना चाहिए, तभी 0 मिलेगा, 3 मिलेगा. So 2x minus 1 is equal to 0. That means 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2. And there is no maximum value because x values are increasing. This f of x value will increase and increase and increase like that. Okay. So like this you can say. So in this particular example, हमने graph draw नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. By looking at the equation, we said this function is having a minimum value and the minimum value is 3 and the minimum value is at the point x is equal to 1 by 2. And since x is increasing, this function value will increase. So there is no maximum value. Okay, this is most easier thing. अगर आपने quadratic का idea वाला use करेंगे तो 2x में a minus b the whole square is a square. So a square is 4x square minus 2ab, 2 into, so 4x plus 1 plus 3. So आपको आपका y नहीं तो f of x मिलेगा 4x square minus 4x plus 4. And you can see it's the quadratic equation with the leading coefficient is 4. So leading coefficient 4a, a is greater than 0. So that means it will be opens up. Open up है तो हमें पता है कि minimum value होगा and minimum value है तो vertex में होगा. So x coordinate of the vertex. X coordinate of the vertex. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस बी बाई 2a. तो माइनस बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8. सो आपको मिले x कोऑर्डिनेट 1 बाई 2. सो अभी आपको उसका y वैल्यू चाहिए तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना 4 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 4 1 minus 1 by 2 4 by 1 minus 4 by 2 2 plus 4. So which is equal to 4 plus 1 5, 5 minus 2 3. So you can see that minimum value is 3. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. You can do it in different ways. तो हियर आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप चाहिए तो आपने लास्ट में जो पढ़ा है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आप डायरेक्टली h कॉमा के इज द वर्टेक्स करके बोल सकते हैं. वर्टेक्स h कॉमा के तो x वैल्यू इज h, y वैल्यू इज k, ऐसे भी बोल सकते हैं. क्लियर? एनी डाउट? Now, look at another function, f of x. F of x is equal to 9x square plus 12x plus 2. So of course, it's a quadratic function. A is equal to 9, which is greater than 0. So graph is, हमें पता है graph is open up. So open up है तो there is minimum value at vertex. So x coordinate of the vertex is minus b by 2a. So minus b is 12 divided by 2 into 9, 18, which is minus 2 by 3. So substitute that value. So at x is equal to minus 2 by 3, f of x, value of the function is equal to 9 into minus 2 by 3 का square 4 by 9 plus 12 into minus 2 by 3 plus 2. So 9 cut होगा 4, 12 in 3 cut होगा 4, 4 into minus 2 minus 8 plus 2. So 4 plus 2 6 minus 8 minus 2. So
minimum value at x is equal to -2/3 and minimum value is -2, and you can see that there is no maximum value. सर वो x इज इक्वल टू -b/2 कैसे है? लाइक क्या बोलते हैं उसके लिए, लाइक इट्स अ फॉर्मूला, लाइक इसका प्रूफ देके बताते, जैसे क्या बोले उसको हम, जैसे ax² + bx + c को, लाइक आई विल क्लियर दिस, ax² + bx + c को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करना था। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करने के लिए हम क्या करते थे, x का कोएफिशिएंट b, उसका हाफ, सो b/2, उसका स्क्वायर जो ऐड करते था, वैसे ऐड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो उसमें से मिलते था उसका वो फॉर्मूला -b/2 है, इसका वर्टेक्स है करके, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है करके। I will show, okay, see, y is equal to ax² + bx + c। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी x² का कोएफिशिएंट है कॉमन लिखेंगे। सो ये कॉमन, x² + b/ax + c/a। सो देन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करने के लिए क्या करते, इधर जो b x का कोएफिशिएंट था उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना था। सो ऐसे करते हैं, इस इज a इंटू x² + b/a का हाफ आएगा b/2a। सो b/a x + b/2a का स्क्वायर ऐड किया, b/2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, ये तो इधर भी ये चाहिए तो बाहर लिख सकते हैं, प्लस सी था, बट जो सब्ट्रैक्ट करना था, सो b/4a², इधर जो अंदर आएगा, हमने b²/4a² अंदर ऐड किया था, बट इसका एक्चुअल इफेक्ट a इंटू b²/4a² है। सो उसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, b²/4a सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। सो जितना ऐड किया उसका उतना सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो इधर हमने b/2a द होल स्क्वायर अंदर ऐड किया था, b/2a द होल स्क्वायर मतलब b²/4a²। तो इन इफेक्ट इट इज a इंटू b²/4a²। सो ये a कट होगा, b²/4 है, इसलिए b²/4 बाहर सब्ट्रैक्ट किया। अभी बाकी जो भी आने दो, देन इधर क्या होगा, दिस इज a इंटू, दिस इज नथिंग बट x माइनस b/2a द होल स्क्वायर, प्लस यू कैन सिंप्लीफाई दैट। So here you can see that x minus h the whole square, x minus h the whole square जो फॉर्म में आएगा, x minus h the whole square, x minus h the whole square। So उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। This h is the h को हमने जो नॉर्मली बोलते थे h, k is the vertex। So this h is the vertex, so either h is equal to -b/2a आएगा। That is why that formula comes। So इधर x, sorry प्लस ना, इधर प्लस है नॉट माइनस, क्योंकि इधर प्लस प्लस है। So that is why it is h is equal to -b/2a। It is a formula obtained from the standard method। So standard method में standard form में लिखना है तो हम x² is equal to 4a into, or x minus h the whole square is equal to x minus h the whole square is equal to 4a into y minus k फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे लिखने के टाइम h, k is the vertex। सो वैसे लिखने का टेक्निक था, हमें जो x का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो वैसे हम करते हैं नॉर्मली, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो उसमें से हमें मिल जाते हैं कि जो h इज नथिंग बट -b/2a।
क्लियर संकेत? मिनिमा के लिए है ना सर? जो भी है, मिनिमा है तो भी, मैक्सिमम है तो भी, दिस इज टू फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए ना। क्वाड्रेटिक है तो भी, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ दो प्रकार आते हैं, एक तो ओपन अप आते हैं और एक तो ओपन डाउन आते हैं। जो सबसे लास्ट पॉइंट वर्टेक्स ही होगा। ओपन अप है तो जैसे ओपन अप है तो मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। ओपन सॉरी ओपन डाउन है तो, ओपन अप है तो maximum value at vertex. So that is a minus b by 2a is the x coordinate of the vertex. If it is opens up at vertex, there is minimum value. If it is opens up at vertex, it is having the maximum value. Clear? Is it clear? Yes sir. Okay. So now another question. f of x is equal to, इधर हमने डेरिवेटिव का कोई एप्लीकेशन यूज नहीं किया अभी तक, सिर्फ what is maxima or what is minima, that is what we are discussing. See, what about this function? F of x is equal to minus of x minus 1 the whole square plus 10. तो क्वाड्रेटिक वगैरह सब छोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं? x minus 1 the whole square is always greater than or equal to 0, right? So minus से multiply, if you multiply with minus, minus of x minus 1 the whole square is always less than or equal to 0, correct? If you multiply with minus on both sides, the inequality symbol flips. Then minus of x minus 1 the whole square plus 10, it is less than or equal to 0 plus 10, that means less than or equal to 10. So इसमें से क्या बोल सकते हैं? This means f of x is having the maximum value is equal to 10. Maximum value is equal to 10. And when it maximum, and maximum occurs when x minus 1 is equal to 0. x minus 1 0 है तो ही वो maximum value मिलेगा. Correct? That means that x is equal to 1. So there is no minimum value. Understood? एक्सपांड करके क्वाड्रेटिक में भी कर सकते, इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 10. दिस इज नथिंग बट माइनस x स्क्वायर प्लस 2x minus 1 plus 10 minus x square plus 2x plus 9. This is your function. You can see that it's a quadratic function with leading coefficient is negative. Leading coefficient negative, so it is opens down. Opens down at the maximum होगा at vertex में. So x coordinate of the vertex is minus b by 2a. Minus b is 2 by 2 into a is minus 1. So minus 2 by minus 2, it is 1. So then f of 1, value of the function 1, minus 1 square is 1, plus 2 into 1, 2, plus 9. 9 into 2, 11 minus 1, 10. You can see that maximum, that means this point is 1, 10 vertex is. That means maximum at x is equal to 1 and the maximum value is 10. क्वाड्रेटिक इसलिए ऐसे कर दिया, बट उसका भी कोई जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. x minus 1 the whole square is always positive, so minus of x minus 1 the whole square is always negative. तो उससे 10 दोनों साइड ऐड करेंगे तो minus of x minus 1 the whole square plus 10 is always less than or equal to 10. So always less than or equal to 10 मतलब maximum value is 10.
एंड तो मैक्सिमम वैल्यू 10 कब मिलेगा, x माइनस 1 0 होना चाहिए और x माइनस 1 द होल स्क्वायर 0 होना चाहिए. So x minus 1 the whole square 0 मतलब x minus 1 0. That means x is equal to 1. So we can say that the maximum value is 10 and it will occur at the point x is equal to 1. Okay. So this is a basic concept only. What is the maximum value? What is the minimum value? In the coming classes, we will go to that local maximum and local minimum that I will tell you. And there we need the help of the derivatives to find the local maximum and local minimum, all those things. That we will discuss in tomorrow's class. Okay. See you in tomorrow's class then. Take care. Okay. Thank you, sir.